Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aziza Munir, and today we are meeting for the purpose of discussing correlation coefficient, particularly the correlation and the coefficient of correlation. So in last lecture we have taken into consideration that what is regression, and we have identified that there exists a linear regression between two variables, which is determined on a scatter plot, and this shows a kind of relationship between two variables which can be identified and which can be noted through linear equation, which is y is equals to alpha plus beta x. Now if regression is already there, today we will be talking about that if already regression describes the relationship between two variables, then what is the need and purpose of discussing correlation? Once we are conducting research, or once we are analyzing the multiple variables affecting one situation, affecting one area, this particular situation usually occurs once we are talking about the practicability, or once we are talking about the practical business environment, and sometimes non-business environment as well. But once we are analyzing any area and we are taking into consideration that how this area has been affected by multiple forces, so these multiple forces are actually those variables which are affecting the major problem which is under consideration. So in correlation we talk about that how much relationship one variable is having with the other variable, or we can say that how much relationship independent variable is having with the dependent variable. If there exist multiple variables in the model, then we need to analyze that which variable affects the dependent variable majorly. So this area of analysis is not discussed in regression, but later on we will be discussing that if correlation is there and regression is there, then how we will be taking the difference. But in today's lecture we'll be focusing on correlation and coefficient of correlation, and we'll be talking about the difference between regression and correlation. So here it is mentioned that we'll be talking about what is correlation, how it can be indicated, what is the parameter of the correlation indication, and what is the purpose of correlation if regression is already there, what does coefficient of correlation indicates, and what is linear, multiple, and partial correlations are. So let's start with the introduction of correlation. Correlation is basically a linear association between two random variables. As simple as that. That correlation is nothing as sophisticated and as complex, but it just describes the relationship and the degree of association between two random variables. So for the correlation analysis shows us how to determine both the nature and strength of relationship between two variables. तो यहाँ पर हमें nature का और strength का of relationship का पता लगता है. Both of these areas are discussed, that what is the nature and what is the strength of relationship between the two variables. When variables are dependent on time, correlation is applied. Now that is the major area, or that is the major property which describes the correlation, that when variables are dependent on time, meaning time affect कर रहा होता है अगर एक variable को दूसरे variable के साथ, तो उस case में हम correlation को apply करते हैं, and it lies between -1 to +1. A zero correlation indicates that there exists simply no relationship between the two variables. A correlation of minus indicates a perfect negative correlation, meaning there is a relationship but that is negative relationship. And a correlation of positive indicates a perfect positive relationship between two variables. Now there exist three types of correlation, which are the positive, the negative, or no relationship, or the perfect relationship. In type 1 we discussed that there exists positive relationship, there exists negative relationship, or there exists no relationship, or there is a perfect relationship between two variables. If two related variables are such that when one increases or decreases, the other also increases or decreases, meaning
अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो एक की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी की क्वांटिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो दैट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन. इफ बोथ इंक्रीजेस दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ बोथ डिक्रीजेस दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन. If two variables are such that one increases, the other decreases, that is the negative relationship. And if both the variables are independent, there will be no relationship. In type 2, we talk about linear and non-linear relationship, or linear and non-linear correlation. When plotted on a graph, it tends to be a perfect line. When plotted on a graph, it is not a straight line. So, अगर हम लीनियर की बात करते हैं, तो अगर हम लीनियर कोरिलेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें तो हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मे बी इट इज स्लोपी, बट एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड लाइन हमें नजर आएगी, विच इज अ लीनियर line, and it proves that there exists linear relationship between the two variables. And when plotted on graph, if it is not a straight line, then there exists non-linear relationship. Non-linear के case में it can be a parabola, it can be circular kind of relationship, it can be cyclic relationship, जो कि हमने टाइम सीरीज में भी एक दफ़ा देखा था. तो अगर वो linear नहीं है तो वो किसी भी और किस्म की relationship हो सकती है, which can be non-linear. So here we have taken in consideration multiple areas. कुछ ऐसे हमने graphs को discuss किया है जो हमें linear, positive linear, negative linear और non-linear regressions को show कर रहे हैं. Perfect correlation उस वक्त होगी when it is equals to 1, which is depicted with the graph 1 with the red dotted line. This line shows that there is positive correlation between the two variables and it is equivalent to 1, which is linear positive relationship. When there is increase in the degree of one variable, it reveals increase in the quantity of y variable as well. So that is a positive correlation with the perfect linear relationship, that is 1. So in negative relationship, we talk about we consider that the values of x are increasing, or one variable is increasing and the other variable is falling. So there exists perfect relationship but negative relationship. So that is -1, indicated through -1 sign. Perfectly non-linear relationship, perfectly linear and negative relationship. So when correlation is 0, the plot will be holding values which are not in any symmetry, meaning both the variables are independent and they are not in any relation with each other, meaning that one variable is not affecting the other variable, any change in one variable is not affecting the other variable. So that is why there doesn't exist any relationship which is depicted through 0. Now here these kind of positive relationships are discussed कि point 8 भी इसका result आ सकता है. अगर point 8 result आता है which is closer to 1, which is closer to perfect linear relationship, perfect positive relationship, तो उस केस में इस किस्म की presentation होगी हमारे पास ग्राफ पे. अगर हमारे पास correlation point 2 है तो अगेन दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्लॉट जिसके ऊपर हम लीनियरिटी को, लीनियर एनालिसिस को डिस्कस कर सकते हैं. जब हमारे पास कोरिलेशन 0 है तो उस केस में हमारे पास दैट इज़ अ स्कैटर प्लॉट विच इज़ डिटरमिन्ड. Now in third type of relationship, there exists a simple correlation, multiple correlation and partial correlation. Now जब हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था तो हमने उसमें बात की थी पॉजिटिव, नेगेटिव, नो रिलेशन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप की. जब हमने टाइप 2 की बात की तो उसमें हमने लीनियर और नॉन लीनियर की बात की. जब हमने टाइप 3 को डिस्कस किया है कोरिलेशन में कि देयर इज थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन विच शोज द सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. The two independent and one dependent variable will be shown if. So this is a simple correlation. When one dependent and more than one independent variables are considered, then this becomes the multiple correlation. And when one dependent variable and more than one independent variable, but not only one independent variable is considered, but and other independent variables are considered constant, तो उस केस में हम partial को consider करते हैं. तो ये तीनों का केस simply आपको एक नज़र में नज़र आ रहा होगा.
कि जब हमारे पास सिंपल कोरिलेशन हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उस केस में हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस के ऊपर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग द टाइम डोमेन इन रेंज इन मार्जिन, सो दैट बिकम्स द सिंपल कोरिलेशन। अगर हमारे पास 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम मल्टीपल कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं। When one dependent variable and more than one independent variables are studied, but only one independent variable is considered and other independent variables are considered constant. तो जब हमारे पास ऐसा सा केस हो जिसमें हमारे पास एक सिचुएशन के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमने बाकियों का जो इफेक्ट है वो कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है और सिर्फ एक वेरिएबल को उठाकर उसकी बेसिस के ऊपर हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की है, सो दिस बिकम्स पार्शियल रिलेशनशिप। In that partial correlation, we used to describe that there exist multiple factors, there exist multiple independent variables which affects the situation, which affects basically the problem statement, but we are not considering them because of any particular limitation. Might be the data is incomplete, or might be that particular factor is ineffective at one spot, और उसका जो इफेक्ट है वो क्लेरिफाई नहीं हो रहा। या फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं कि कंजम्पशन जो है वो अफेक्ट होती है बाइंग पैटर्न से, लेकिन बाइंग पैटर्न के अलावा इसके अंदर एज भी एक फैक्टर है, इसके अंदर फैशन एंड ट्रेंड भी एक फैक्टर है, और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं हमारे इन्फ्लेशनरी चेंजेस वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हो सकता है कि हमने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट लिया और हम सिर्फ एज की बेसिस के ऊपर कंजम्पशन को डिटरमिन कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी मार्जिन हमारे पास गिवन नहीं है या उसका डेटा हमारे पास इनकम्प्लीट है, somehow we can say that it is inaccurate, or we just want to analyze that how much age is affecting the level of consumption of a specified product. So in that case we are taking rest of the variables constant, although they exist, although they remain there, but we are not taking their share in consideration, or we are not taking their effect in consideration of our problem, which is just affected by age towards the consumption pattern. So in that case we will be applying the partial correlation methodology. So methods of studying correlation are through scatter diagram method. अगर हम पता लगाना चाह रहे हो कि हम correlation को किस तरह से study कर सकते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है scatter diagram जिसके through हम read कर सकते हैं कि what is the relationship. Secondly एक method है जो कि pearson ने describe किया था, identify किया था, which is known as Carl Pearson coefficient of correlation method, and third one is the Spearman's rank correlation method. ये 3 methods हैं जो कि correlation की domain में identify हो चुके हुए हैं और इस domain के अंदर रहकर हमें पता लगता है कि हम correlation को किस तरह से read out कर सकते हैं। Generally अगर हम कोरिलेशन को डिस्कस करें तो बेसिकली कोरिलेशन हमें बता रहा है कि रिलेशनशिप क्या है 2 वेरिएबल्स की। ये भी हो सकता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट के साथ डिस्कस कर रहे हो और इंडिपेंडेंट की रिलेशनशिप डिपेंडेंट के साथ डिस्कस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम कॉजेशन की बात नहीं करते कि विच कॉजेज व्हाट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक स्मोकिंग है और एक हेल्थ है। ठीक है कि हेल्थ इज अफेक्टेड थ्रू स्मोकिंग, तो यहाँ पर दैट इक्वेशन शोज दैट स्टेटमेंट शोज दैट स्मोकिंग इज अफेक्टिंग हेल्थ, लेकिन बेसिकली हम कोरिलेशन के अंदर कॉजेशन को एनालाइज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हेल्थ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्मोकिंग के साथ या स्मोकिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है या कोई इम्पैक्ट नहीं है हेल्थ के ऊपर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट linear, non-linear, multiple, partial, or you can say the positive and negative or no relationship. But we are here not considering the point that whether there exists which variable is caused by the other or which variable affects the other variable in which density, वो कितनी velocity के साथ किस percentage of effect के साथ दूसरे variable को create कर रहा है। तो we are not interested in knowing the causation effect, we are just considering that
what is the relationship of two variables, which is determined through three areas. One is through reading the scatter diagram method, meaning reading the scatter plots. Second is the Pearson coefficient of correlation method, and third is the Spearman's rank correlation. Now, correlation of linear correlation is a linear relationship, which might be a strong relationship if the fitted line is good. So here we have taken two graphs in consideration, जहाँ पर हमारे पास जो position है, जो हमारे जो observations हैं, उनका जो observation की जो exact plotting है वो हमें show हो रही है drug A के case में, जिसमें हमने डिटरमिन किया है कि ये जो पॉइंट्स हमें स्क्वायर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं प्लॉटेड एरिया के ऊपर, ये पॉइंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं अपने प्लॉटेड एरिया में स्क्वायर्स की फॉर्म के अंदर, इनकी जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है दिस इज कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग, मीनिंग when we talk about first and second point and second and third point, there isn't exist much fluctuation. Right? There is difference, but there isn't any fluctuation of increase or decrease very clearly, but they all are showing a negative trend, right? So when we combine them in the form of a hypothetical line through correlation, this becomes very much sure that the combination of these points are very accurately described through this line. But on the other hand, once we talk about the effect of drug B on its dosage, here we come up with comparatively scattered location of the observations with the hypothetical line. So in that case, the line shows a moderate fit towards determining the correlation. So therefore, the clustered or the more closely related points or the observations plotted on the graph paper towards the line, which is the hypothetical line of correlation, if they are more clustered फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे या बहुत डेंसली एसोसिएटेड होंगे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और यूजुअली वो 1 के इक्वल जा रही होगी एज इट इज़ -1 या +1 किसी भी फॉर्म में, बट इट विल बी मोर क्लोजर टू 1. The line is a good predictor or a good fit with the data. The more spread out of the points, the weaker the correlation and less good of the fit. The line is a regression line, that is y is equals to bx plus a. Line बिल्कुल exactly वही चीज़ शो कर रही है जो हमने regression के अंदर analyze किया था, which is y is equals to a plus bx. Now the coefficient of correlation. A measure of the strength of the linear relationship between two variables that is defined in terms of the sample covariance of the variables divided by their sample standard deviation. So that is represented through small r. The coefficient of correlation is determined through small r. It is represented through small r and its value lies between +1 to -1, and its magnitude and direction is described in correlation. So basically the coefficient of correlation है it is a measure of strength of linear relationship कि जो linear relationship exist कर रही है उसकी strength कितनी है दोनों variables के दरमियान में. So that is something which is determined through the covariance of variables, which we obtain through by dividing the covariance with their standard deviation. So that is the range of coefficient of covariance, coefficient of correlation, that lies between -1 and +1. The positive and negative signs are used for positive linear correlation and negative linear correlations respectively. So that is the formula, a very very important formula for consideration. यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो r के ऊपर वैल्यूज नजर आ रही हैं, r of x upon y. We are taking relationship of x on y. That is why it is shown through r of x on y. यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको शो हो रहा है, सॉरी, ये जो आपको चीज शो हो रही है, दिस शोज दैट x is placed before y. इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप ऑफ कोरिलेशन ऑफ x on y. This may exist. This may be formulated as r of y on x. ये इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है कि जब हम रिलेशनशिप y और x के दरमियान में देख रहे होंगे, जिस तरह हमने स्मोकिंग और हेल्थ को अगर डिस्कस किया है,
और हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या स्मोकिंग हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है, नेगेटिवली कर रही है या नहीं कर रही है. सो इन दैट केस we are talking about x on y if we are considering smoking as x and health as y. तो उस केस में हम x और y के रिलेशनशिप को डिटरमिन करें. लेकिन अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हेल्थ इंडिपेंडेंटली अफेक्ट होती है स्मोकिंग से कि नहीं होती, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एज अ फोकस ऑफ आवर कंसिडरेशन. तो उस केस में हमने हेल्थ को डिस्कस करना है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय स्मोकिंग positively, yes it is affected by smoking, or it is not affected by smoking, or it is negatively affected by smoking. So in that case हमने health को focus किया और हम health को determine करना चाह रहे हैं, उसकी relationship को identify करना चाह रहे हैं, तो ये फिर inverse हो जाएगा. We can calculate R of x on y and R of y on x, both areas we can talk about. So that is something which is determined through n of summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x whole square multiplied by n summation y square minus summation y whole square under the root. x और y हमारे पास दो वेरिएबल आइटम्स गिवन होंगी. x फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मोकिंग के रिजल्ट्स हैं कि नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोकन, नंबर ऑफ सिगरेट्स यूज्ड यूटिलाइज्ड इन वन डे. और हेल्थ हमारे पास एक और वेरिएबल हो सकता है जैसे y है, जो कि हमने यूनिट्स में किसी तरह से इसको मेजर कर लिया. तो इन दैट केस हमारे पास या एज और हाइट का हम कंसिडर कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ हाइट एंड एज. तो इन दैट context we are having multiple units of age as well as multiple units of weight or height. So in that case we are taking correlation of age and height. तो x हमारे पास age होगी और height हमारे पास y होगी. हमारे पास multiple figures, multiple observations इन दोनों cases में mention हो सकती हैं, और उनको जब हम number of observations will be identified through n. जितनी भी number of observations under consideration होगी that will be determined under n. Summation x y का मतलब ये है कि हम x और y का product ले लेंगे, meaning हम height और age का product ले लेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा, उसको sum कर लेंगे तो that will be one amount. Minus summation x summation y का मतलब ये है कि independently हम x की observation को add करेंगे और independently हम y की observation को add करेंगे और उन दोनों का product लेंगे. Whatever is these summation of x and whatever is the summation of y, we will be taking a product of both and taking difference of these products from the combined product of x and y. Then we will be dividing them with the standard deviation of both the numbers, that is summation x square minus summation x whole square under root into summation n summation y square minus summation y whole square under root. So यहाँ पर हमारे पास shared variability of x and y variables on the top discuss हुई हुई है और individual variability of x and y variables bottom में discuss हुई हुई है. तो यहाँ पर ये जो numerator है हमें describe करता है shared variability और individual variability हमें describe हुई हुई है denominator में, जहाँ पर हमने x को उसके x को कंसिडर किया है उसकी सेल्फ समेशन के साथ और x स्क्वायर को डिस्कस किया है उसकी सेल्फ समेशन के साथ और y स्क्वायर को डिस्कस किया है उसकी y समेशन के साथ. सो हियर वी नीड टू इंटरप्रेट कि जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास r के ऑफ x अपॉन y और y अपॉन x वो क्या होंगे. तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आएगी तो दिस माइट शोज दैट r इज ग्रेटर देन 0.70 और r इज लेस देन -0.70. तो इस केस में इफ r lies between -7 to +7 तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप इज कंपैरेटिवली अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. मॉडरेट रिलेशनशिप उस वक्त होगी व्हेन r lies between अच्छा जब हम फर्स्ट वाला जो पॉइंट है अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आप कंसिडर करें कि अगर हमारे पास r की वैल्यू इवन -0.7 भी आई है तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है. Why? Because we are thinking here that the relationship which is shown in the form of R is negatively correlated, but it is very finely correlated.
रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव स्लोप को जरूर शो कर रही है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है. So 0.7 minus 0.7 is something which doesn't mean that through negative sign we are expecting कि relationship weak हो गई है. Relationship weak उस वक्त होगी when relationship is moving closer towards zero. नेगेटिव में के कंसर्न में भी हो सकती है और पॉजिटिव के कंसर्न में भी हो सकती है. In both the areas, if it is approaching zero, so in that case we can say that there is a weak or moderate relationship. So in moderate relationship, correlation R is between 0.3 and 0.7 or R lies between minus 0.3 or minus 0.7. In दोनों के केस में when it is approaching, when it is closely related to zero, this shows that there is moderate relationship. And weak relationship when R lies between 0 and 0.3 or R is between 0 and minus 0.3. In both the cases there will be comparatively a weaker relationship. Then there comes coefficient of determination. So in coefficient of determination, we talk about that what is the determined value of this correlation which exists between the two variables. So this usually lies between 0 and 1. Here we are not talking about negative perspectives, because on this coefficient of determination we are taking the decision that whether this relationship exists or not exists. So if it is closer to 0, there is no relationship, and if it is closer to 1, there exists positive relationship. So we are not interested in knowing the negative areas here, because we are totally referring towards the determination of decision making. That once we are talking about decision making, once we are identifying that this particular variable is related or not related, so in that case we are describing the coefficient of determination, which is determined by R square. Remember, when we have discussed regression, the coefficient of determination was represented by capital R square. So here the coefficient of determination in correlation is determined through or is represented through small r square. Similarly, regression is shown through capital R, and correlation is shown through small r. So the coefficient of determination is a measure of how well the regression line represents the data. If the regression line passes exactly through every point on the scatter plot, it would be able to explain all of the variation. अगर हमारा जो plotted area है, जो plotted observation है, उसके exactly center में से line हमारी गुजर रही है, जो हमारी hypothetical regression line है, वो exactly हमारे exactly उन observations के center में से गुजर रही है और उनको fully capture कर रही है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि it will be able to explain all of the variation. जितनी भी areas of variation हो सकते हैं इस particular line के अंदर वो इसको explain कर रही है. Therefore, the further the line is away from the points, the less is able to explain. जितना ज़्यादा उसमें variation होगा, जितना ज़्यादा हमारे plotted area के अंदर और line के अंदर variation आ रहा होगा, जिसको हमने SSE से determine किया था, जो कि mean of square deviations था, जब हमने उसकी deviations निकाले थे, और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी उसको हमने जब डिस्कस किया था लाइन की पोजीशन के साथ, तो वहाँ पर हमने वहाँ से एरर मार्जिन आइडेंटिफाई किया था. तो जितना ज़्यादा एरर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जितनी ज़्यादा डेविएशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी, जितना ज़्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का प्लॉटेड लाइन के साथ, उतनी वो लाइन उस ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रही होगी. तो एक लाइन रिग्रेशन लाइन कितने हद तक डिटरमिन करती है वैल्यू ऑफ कोरिलेशनशिप, दैट इज एक्चुअली डिटरमिन थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से. आई रिपीट कि जो रिग्रेशन लाइन है वो कितने हद तक डिस्क्राइब करती है प्लॉटेड एरिया के ऊपर वैल्यूज की डेंसिटी को या उनके स्प्रेड को. तो अगर तो वैल्यूज बहुत क्लोजली रिलेट करती है लाइन के, तो इसका मतलब ये है कि लाइन ने या कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ने बहुत फाइनली एक्सप्लेन कर दी है रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स की. अगर उनके दरमियान में वेरिएशन है या एरर मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, या जो मैक्सिमम टर्म है वो बहुत ज़्यादा वेरिएट करती है एक्चुअल लाइन के पोजीशन के साथ, तो या मैं आपको उसकी थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन बता देती हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि अगर हमारी रिग्रेशन लाइन यूं प्लॉट हुई हुई है और उसके अंदर जो एक मेजर डिफरेंस आ रहा है
वो इस तरह से शो हो रहा है कि एक जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो हमारा प्लॉट है वो एक्चुअली इज़ अनेबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट रिलेशनशिप। सो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। R square is useful because it gives the proportion of the variance, that is the fluctuations of the variance of one variable that is predictable from the other variable. जो R square है वो useful होता है क्योंकि वो हमें provide करता है what is the level of variability or what is the level of change which exists between one variable and which can be predicted from the other one. So it measures, it is a measure that allow us to determine how certain one can be in making predictions from a certain model or graph. तो इस केस में हमें पता लगता है कि जब हमें प्रिडिक्शन करनी होती है एक मॉडल की बेसिस के ऊपर, ग्राफ पेपर की बेसिस, क्या ग्राफ पेपर में जो प्लॉट हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर जब हमने प्रिडिक्शंस करनी होती हैं, तो हाउ मच वी आर सर्टन to take a specific decision. So basically जो coefficient of determination है वो एक ऐसे measure है जो हमें बता रही है कि how to determine certainty in our prediction. Right? So on the basis of this certainty we can take the right or wrong predictions. The coefficient of determination is the ratio of explained variation to the total variation. हमने लास्ट लेक्चर में भी वेरिएशन के ऊपर डिस्कशन की थी और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं और हमने कोरिलेशन की बेसिस के ऊपर प्लॉटिंग की है, तो वहाँ पर हमारे पास जो लाइन शो हो रही है वो हमें मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है हमारी लाइन के साथ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का, उनका सम टोटल जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है। तो द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन के साथ जो एक्सप्लेन वेरिएशन है उनका डिफरेंस हमें मालूम हो जाता है, विच इज SSE over SSR. The coefficient of determination is such that R square lies between 0 and 1, which denotes that the strength of linear association is what between x and y. कि अगर हमारे पास जो strength of relationship है वो हमें show हो रही है from 0 to 1, so it clearly indicates कि if it is equivalent to 1, it is exactly determining the certainty towards the prediction, and if it is closer to 0, this clearly indicates that our prediction is very loosely attached and very is having multiple fluctuations towards the determining the certainty of one event, of one variable towards the other. So in that case the coefficient of determination helps, in which the degree associates degree of association lies between 0 and 1. So coefficient of determination also represents the percent of the data that is closest to the line of best fit. अभी हमने इससे पहले ग्राफ के अंदर डिस्कस किया था बेस्ट फिटेड लाइन को। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो हमें ये भी बताता है कि कितना परसेंट जो प्लॉटेड एरिया है वो हमारी फिटेड लाइन के ऊपर बेस्ट डिस्क्राइब हो रहा है। सो इफ इट इज प्लेस्ड इन विद डेंसिटी, इफ इट इज प्लेस्ड विद क्लस्टर, or the given observations are lying in cluster to the line which is drawn on prediction, which is the hypothetical line, this shows a best fit. For example, if R is 0.92, then R square is 0.850, which means that 85% of the total variation in Y can be explained by the linear relationship between X and Y as described by the regression equation. So the other 15% of the total variation in Y remains unexplained. तो यहाँ पर हम total degree of variation के ऊपर बात करते हैं कि which is explained and which is unexplained. अगर हमारे पास correlation जो है which is R, अगर हमारे पास कोरिलेशन हमने उस फार्मूला के थ्रू कंप्यूट जो की थी, वो जब मैन्युअली हमने डिस्कस किया था कि बाय हैंड अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से कंप्यूटेशन आएंगी हमारे पास। तो अगर हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 0.92 आई है और R स्क्वायर हमारे पास 0.85 शो हो रहा है, मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारे पास 0.85 है, तो इसका मतलब ये है कि 85% टोटल वेरिएशन जो है इन Y, it can be explained with the linear relationship between X and Y. Rest of the 15% variation, yes, it do exist, but it is not explained. So in that case, yes, variation remains there with Y, क्योंकि Y की जो plotting हुई है हमारे पास उसके अंदर कुछ ऐसे differences आ रहे हैं जो कि हमारी plotted line के अंदर cover नहीं होते। तो अगर हमारी plotted line में या हमारी hypothetical line में वो cover नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो exist तो कर रहे हैं,
और डेफिनेटली अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका जो डिग्री ऑफ चेंज है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे अपनी एसोसिएशन को तो उसमें मेजर भी होगा, लेकिन हम उसकी वेरिएशन को अनएक्सप्लेन्ड कंसिडर करते हैं और हम उसको अपनी मेजरिंग एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करते। Okay, now whatever we have discussed so far used to come under Pearson's rank correlation. लेकिन अगर हम Spearman's को analyze करें तो Spearman was a statistician who has developed another methodology for calculating the correlation, and he has basically identified a formula on the basis of which उसने उसको जो correlation के areas हैं उसको डिटरमिन किया है। जो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था विच इज़ ऑफ आर, विच इज़ द कोरिलेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, जिसमें हमने एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई की बात की थी, वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पियर्सन। लेकिन जो स्पीयरमैन्स है उसकी एक और डिस्क्रिप्शन है। उसके ख्याल में हमारे पास जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है वो इस तरह से मैनेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर थोड़े से और चेंजेस होने चाहिए। एक बहुत डिटेल्ड डेरिवेशन है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की, लेकिन आई थिंक कि जो डेरिवेशन है दिस शुड नॉट बी कवर्ड इन योर एरिया ऑफ आपके इस लेवल के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो भी डेरिवेशन है स्पीयरमैन्स की, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे। Spearman's rank coefficient is basically a method to determine correlation when the data is not available in numerical form, and as an alternative the method of rank correlation is used. Thus, when the values of two variables are converted to their ranks and they form a correlation which is obtained, the correlation is known as rank correlation. यहाँ पर स्पीयरमैन उस वक्त अप्लाई होता है, या स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे पास एक्चुअली डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें उसकी रेंज पता होती है, हमें उसकी रैंकिंग पता होती है। तो हम जब उसकी रैंकिंग को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में तो वहाँ पर हम पियर्सन को अप्लाई नहीं करते, वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं स्पीयरमैन्स को। तो स्पीयरमैन्स में जो हमने कन्वर्जन की है वो बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल डेटा से न्यूमेरिकल डेटा में की है, और हमारे पास उस पर्टिकुलर रैंक के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम डेविएशन से आइडेंटिफाई करते हैं। सो Spearman's rank correlation coefficient is determined through P, which can be calculated when actual ranks are given 1. Secondly, ranks are not given by grades but given by ranks are not given by, but grades are given but not repeated, and ranks are not given and grades are given and repeated. तो ये तीन conditions हमारे पास हैं अप्लाई करने के लिए Spearman's rank correlation। वहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी बल्कि उनके स्पेसिफिक ग्रेड्स होंगे। उन ग्रेड्स को जब हम कंप्यूट करेंगे एक्चुअल न्यूमेरिकल डेटा के अंदर तो वहाँ पर हमारे पास जो फिगर आएंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सो एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर रैंक्स गिवन नहीं है और ग्रेड्स गिवन है तो वो भी रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों के केस में हमारे पास जो P की वैल्यू है वो डिटरमिन होती है थ्रू 1 माइनस 6 समेशन DI स्क्वायर ओवर N into N square minus 1, where N is the number of observation and D is the difference between two variables. D हम कैलकुलेट करते हैं जी डेविएशन होती है। D basically describes the deviation. Now this deviation is actually the difference between X values and the ranks of either X or Y. यहाँ पर जो डेविएशन है वो या तो हमारे पास x और x के रैंक्स की बात कर रहे होंगे हम, या फिर हम x और y के रैंक्स की बात कर रहे होंगे। तो इन दैट केस जब हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन नहीं है, इफ द एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस, then we are talking about then we are considering those values which are
converted from ranks to the numerical numbers, but they are not repeated, or if the ranks are not given and grades are given, so they are repeated. So in that case हमारे पास जो formula की computation है, this is equivalent to P, this is determined through P, which is equivalent to 1 minus 6 summation di square over n into n square minus 1, where n is the number of observations and d is the total deviations which are under consideration, and 1 minus, we are taking it from we are taking it as a kind of partial set of from 1, because we are requiring Spearman's correlation which is not greater than 1. So in that case the Spearman's rank correlation will be applied, जो कि हमें एक specified deviation oriented data provide करती है. जब हमारे पास exact numerical data given ना हो तो फिर हम उसको compute करते हैं, फिर हम उसको convert करते हैं towards the numerical data और यहाँ से हम उसकी computation करते हैं. Now how we can test the significance of correlation? A very important area which need to be discussed is the testing of testing the significance of correlation. कि जो भी हमारे पास correlation का figure आया है उसका significance कितना है, उसकी application कितनी है, उसका मतलब क्या है basically. So here in testing for the significance of correlation, we test for the significance of relationship between two continuous variables. अगर हमारे पास दो continuous variables हैं तो हम उनका significant relationship को test करते हैं. We introduce Pearson correlation as a measure of strength of a relationship between two variables, and but any relationship should be assessed for its significance as well as its strength. हमने Pearson को डिस्कस किया उसकी strength शो करने के लिए, लेकिन strength के साथ साथ हमें इसकी significance भी मालूम होनी चाहिए. और significance आपको if you remember जो हमने normal distribution डिस्कस किया था या हमने sampling distribution डिस्कस किया था और उसकी बेसिस के ऊपर हमने hypothesis testing की थी, वहाँ से हमने derive किया था कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक ट्रेडिशनल मेथड है सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने का, विच इज़ थ्रू आइडेंटिफाइंग ऑफ हाइपोथेसिस. तो बिल्कुल उसी तरह से हम कोरिलेशन का भी सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं. लेकिन जब हमने पियर्सन को अप्लाई किया तो पियर्सन से हमें स्ट्रेंथ्स तो पता लग गई दो वेरिएबल्स की, लेकिन हमें उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता लगा. सो देयरफॉर अ जनरल डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स रिक्वायर्स टू बी अंडरटेकन. So factors in relationship between two variables are determined through, first of all, the strength of their relationship, that is indicated through correlation coefficient, which is R, but it is actually measured by the coefficient of determination, which is R square. And secondly, the significance of relationship is expressed in probability levels, that is P, which is significant at 0.05 level of significance, that is when we consider alpha as 0.05, meaning 95% confidence interval के ऊपर हमने बात की. This tells how unlikely a given correlation coefficient R will occur when no relationship in the population exists. Now here we need to note that the smaller P level shows more significant relationship, because the smaller p value if it is less than 0.05 अगर हम उसको tabulate करते हैं और अगर वो इसकी range में आती है तो उसका मतलब ये है कि we are accepting our given hypothesis. But if the larger correlation जब correlation ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि relationship stronger है. तो यहाँ पर strength और significance में थोड़ा सा difference है कि जब हमारे पास जो significance है वो हम determine करेंगे p value से, और p वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉलर आएगी, वो जितनी स्मॉलर आएगी उतनी अच्छी रिलेशनशिप है, उतनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है. और जितना ज़्यादा हमारे पास कोरिलेशन आता है, इट इज़ क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, तो जितना बड़ा हमारे पास कोरिलेशन आएगा उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. ये दो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नोटेबल थी. सेकेंडली, अगर हम क्लासिकल मॉडल ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, जिसके अंदर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास it assumes that you have a sample of cases from a population. The question is whether you observe statistic for the sample is likely to be observed given some assumptions of the corresponding population parameter. तो यहाँ पर हम अगर हमारे पास जो important area है वो ये है कि हम sample statistic की बात करें या population parameter की बात कर रहे हैं कोरिलेशन के लिए. जब हमने दो वैल्यूज के अंदर कोरिलेशन कंसिडर करना है तो वहाँ पर either we are taking in consideration the sample statistic or the sample mean in consideration or population parameters in consideration.
If your observed statistic does not exactly match the population parameter, perhaps the difference is due to sampling error. तो इसका मतलब ये है कि हमने जो sample उठाया है उसके अंदर कोई error exist करता है, and that is why they are not equivalent, meaning x bar is not equivalent to mu. The fundamental question is the difference between what you observe and what you expect, given the assumption of the population large enough to be significant to reject the assumption. So here, the greater the difference, the more the sample statistic deviates from the population parameter. जितना ज़्यादा difference होगा उतना ज़्यादा sample statistic जो है वो population parameter से deviate करेगा. But it will be more significant when that is less likely the small probability values or the population assumption is true. जितना बड़ा आपके पास जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपके सैंपल में और पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डेविएशन के चांसेस हैं हमारे कोरिलेशन के कोफिशिएंट में. अदरवाइज इट विल बी मोर क्लोजली रिलेटेड when we are solving the probability issues. The classical model makes some assumption about the population parameter, that population parameter are expressed by Greek letters while corresponding sample statistics are expressed in lowercase Roman letters. R is the correlation between two variables in sample, and RHO is the correlation between the same two variables in population. ये एक थोड़ा सा difference है कि जब भी हमारे पास R show हो रहा होगा तो हम basically sampled variables को discuss कर रहे होंगे, and when we are talking about RHO तो हम discuss कर रहे होंगे correlation between two population variables. A common assumption is that there is no relationship between X and Y in the population, which shows a zero sign, 0.0, and under this common null hypothesis, under this common consideration, the null hypothesis in correlation analysis R shows a zero value. When the test is against the null hypothesis, that is R of xy is equals to 0, the sampling distribution of R is approximately normal, but bounded by -1 to +1 when n is large and distributes t when n is small. तो जब हम हमारे पास R of x जो है वो 0 के इक्विवेलेंट आ रहा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास n बहुत लार्ज है, मीनिंग पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, और t उस वक्त अप्लाई करेंगे, t टेस्ट उस वक्त अप्लाई करेंगे जब पॉपुलेशन हमारे पास कंपैरेटिवली स्मॉल है, n हमारे पास स्मॉल है. The simplest formula for computing the appropriate t value to test significance of a correlation coefficient implies that t distribution lies amongst the degree of freedom, which is n-2. Like for example, अगर आपके पास अगर आपने R.05 determine करना है amongst the literacy rate of the political stability in 10 nations. So we are about to discuss the strong correlationship on the basis of the given data. Now in this relationship, is this relationship strong? The coefficient of determination, which is R square, which shows the value of 0.25, which is taken from R 0.50 को अगर हम square करें तो 0.25 आएगा, which means that 25% of variance in population in political stability is explained by literacy rate, and 75% of the variance in population is unexplained through the literacy rate. So is the relationship is significant? That remains to be determined using the formula above R 0.50 and n, which is 10. So we have to set the level of significance at 0.5 and determine one or two-tailed test. We aim at one-tailed for 8 degree of freedom. Why 8? Because we are considering 10 nations and 10 minus 2 is the degree of freedom. We are taking 8 as a degree of freedom for one-tailed test, where we are obtaining the critical value of 1.86 from the table of t distribution. We observe only t is equals to 1.63 as it lies below as we observe that t is equals to 1.63, it lies below t value, that is 1.86, so the null hypothesis is of no relationship in the population and R is equals to 0 cannot be rejected. So therefore we can say that the relationship can be strong and not yet significant. Conversely, a relationship can be weak but significant. So the key factor is the size of the sample. Size of the sample अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनको हम उनकी टेबुलेशन के साथ इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सैम्पल साइज छोटा है तो उसकी बेसिस के ऊपर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं और n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर टेबुलेटेड रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। For small samples, it is easy to produce a strong correlation, but by chance, and one must pay attention to significance to keep from jumping to conclusions, that is rejecting a true null hypothesis, which means making a type 1 error. For large samples, it is easy to achieve significance, and one must pay attention to the strength of correlation to determine if relationship explains very much or not. तो small sample size जब हमारे पास होगा तो वहाँ पर जो problem आ सकती है वो टाइप 1 एरर की है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। इसलिए क्योंकि हमने लिमिटेशंस में जब डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर, हमने ये डिस्कस किया था कि टाइप 1 एरर को रिड्यूस करने का या चांसेस ऑफ टाइप 1 एरर को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम सैम्पल साइज बड़ा कर दें। लेकिन जब हम सैम्पल साइज बड़ा करते हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंस तो अचीव हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ अचीव होगी या नहीं होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग small sample size, we can easily achieve the strength, we can easily analyze the strength of relationship, but significance might be doubted. But if you are having large sample size, in that case the significance might be achieved very easily, but strength might be doubted. So in both the cases we have to make sure that which type of calculation, which type of conclusion is drawn, and we should not be plunged into a situation of either type 1 or type 2 errors. So जहाँ तक हमने जितनी कोरिलेशन के ऊपर बात की उसको हम अगर एक नज़र में समराइज कर लें और उसके बाद हम इसको रिग्रेशन के साथ रिलेट करें तो थोड़ा सा की एरियाज को हम रिलेट कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन फ्रॉम पियर्सन व्हेन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन को। जब हमने दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, लीनियर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, सो इन दैट केस वी अप्लाई correlation. Spearman used when the curvy linear relationship exists, और जब हमारे पास जो डेटा है it doesn't shows any numerical values but we need to convert it from given ranks, तो उस केस में हम Spearman's relationship correlation या Spearman's rank correlation apply करते हैं। Point biserial used when an independent sample t test can be used. जब हमारे पास sample test, जब हमने t test और z test अप्लाई करने हैं तो वो हम on the basis of sample size determine करते हैं कि कितने कौन सा टेस्ट हमने यूज़ करना है। Phi is used when a chi-square for a goodness of fit is used, which can vary between -1 and +1 and does not tell anything about the causation. Very important thing which we have taken into consideration last time as well, that correlation does not entertain the question of causation, that which variable cause the other variable, और cause and effect की relationship को हम correlation में measure नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ linear, non-linear, curvy linear या नो रिलेशनशिप को या पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को डिटरमिन कर सकते हैं कोरिलेशन के अंदर। Now when we talk about the difference between correlation and regression, we need to identify कि बेसिकली कोरिलेशन का और रिग्रेशन का जो डिफरेंस है वो किधर एग्जिस्ट करता है, या हमें कोरिलेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है अगर रिग्रेशन मौजूद है, या रिग्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है अगर कोरिलेशन हमें रिलेशनशिप्स दो वेरिएबल्स की बताता है। तो एक छोटा सा हम एक अगर कंसिडरेशन करें कि हमारे पास एक मॉडल है फॉर एग्जांपल जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो इस केस में हमने अगर एनालाइज करना हो कि वेरिएबल 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमें कोरिलेशन बताएगा। सिमिलरली वेरिएबल 2 की और डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें कोरिलेशन बताएगा। हमें कोरिलेशन से मालूम हो जाती है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एज वेल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन इसके बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते। Whatever is being described through correlation is just showing the relationship and association between the two variables which are under studied, but they won't describe anything which is related to prediction कि इस relationship के basis के ऊपर आप क्या predict कर सकते हो। So therefore we can say that regression is step higher to correlation in other words, कि correlation हमें बता देती है कि degree of association और degree of closeness
कितनी है या रिलेशनशिप कितनी है दो वेरिएबल्स की आपस में। लेकिन अगर हमने इस रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर डेटा प्लॉट करना हो और उसकी बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन करनी हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में तो ये रिलेशन है, लेकिन आज से 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे, तो वो प्रेडिक्शन वाला जो एरिया है वो कोरिलेशन में शामिल नहीं होता। सो देयरफॉर इसी चीज को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं यहाँ पे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर measures the strength of bivariate association. The regression line is a prediction equation that estimates the value of y for any given x. जो भी हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं या स्कैटर प्लॉट के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यूज शो होती हैं उसकी बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर ईयर्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन में, जो कि एक लिमिटेशन है कोरिलेशन की, कि कोरिलेशन के केस में हम ये प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो विद कोरिलेशन यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इफ यू नो समवन्स marital problems, you can predict that person's level of satisfaction is what. But if you knew more about that person, you could do an even better job predicting satisfaction. So in that case regression will be applied. कि अगर हमारे पास marital problems हमने डिस्कस कर ली हो तो हम level of satisfaction को उसके साथ मेजर कर सकते हैं कि currently at this given time period जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से क्या ताल्लुक है या क्या एसोसिएशन है। लेकिन अगर हमने फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ स्टडी करनी हो कि अगर हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन अभी तक कितनी है तो फ्यूचर में कितनी होगी या फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो वहाँ पर कोरिलेशन हमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं देता। उस केस में हमें डिटरमिन करना चाहिए रिग्रेशन को, जो कि हमें प्रिडिक्शन के बारे में एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। So therefore regression is used to predict one quantitative variable from a whole mess of quantitative variables. So यहाँ पर regression हमें बहुत क्लियर क्वांटिटेटिव अप्रोच बताता है, बहुत क्लियर क्वांटिटेटिव आइडिया देता है टुवर्ड्स मेकिंग अ फ्यूचर प्रिडिक्शन। इसलिए क्योंकि हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया है, हमने इसको y is equals to a plus bx के साथ नोट डाउन किया है। तो x की हमने डिटरमिन किया था कि वैल्यूज वो होंगी जो हमें गिवन है, विच आर दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज हमारे पास 1 to 10 है तो हम वहाँ से 10 की बेसिस के ऊपर जो y के अंदर हमने प्लॉटिंग की है उसमें हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं कि अगर हम x को 12 ले लें तो हमें पता लगेगा कि 2 साल के बाद y के ऊपर क्या चेंज आ रहा होगा। सो इन दैट केस अ वेरी फर्म क्वांटिटेटिव अप्रोच कैन बी डेवलप्ड through regression line, through regression model, which cannot be entertained through correlation. So in regression we used to create an equation for a line which is y is equals to a plus bx or bx plus a, whatever. In both we intercept and slope. Intercept predicts the value of x when x is 0. जब y इंटरसेप्ट हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन के अंदर भी कि ये वो पॉइंट होता है, ये वो वैल्यू है जो हमारी y के हेड के ऊपर डिटरमिन होगी कि जब हमारा जो कि जब हमारा जो कर्व है उसके ऊपर आइडेंटिफाई हमें करनी है लोकेशन के फ्रॉम वेयर वी नीड टू स्टार्ट आवर स्लोप। तो जब x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर तो y की कौन सी वैल्यू होगी, दिस इज डिटरमिन्ड थ्रू अल्फा और विच इज a और विच इज y इंटरसेप्ट, जो शो कर रहा है कि किस पॉइंट से ऑनवर्ड्स हमने डिटरमिन करनी है a की वैल्यू, किस पॉइंट से ऑनवर्ड्स हमने डिटरमिन करनी है स्लोप, और y हमारे पास कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। Goal of regression line is to minimize the discrepancy between the predicted and actual values of y. So the major purpose of analyzing the regression curve here is to minimize the discrepancy between the predicted and actual values of y. हमने एक ऐसी prediction करनी होती है business environment में या एक ऐसा area analyze करना होता है for future which is holding very less or minimum margin of discrepancy. तो अगर हमारे पास डिस्क्रिपेंसी बहुत मिनिमाइज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर के अंदर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स की वो बहुत एक्यूरेट है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या जो प्रीवियस डेटा हमारे पास गिवन है उसकी बेसिस के ऊपर जो हमने इंटरप्रिटेशन की है फ्यूचर की वो बहुत मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे, बहुत साउंड सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर की है जो कि एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई को शो करती हैं। इस एरिया को अगर हम
रिलेट करते हैं कोरिलेशन के साथ, तो कोरिलेशन डिटरमिन्स द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इफ द स्कोर आर इन Z स्कोर्स। बेसिकली जो कोरिलेशन है वो हमारी स्लोप के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो एसोसिएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन प्रिडिक्शन के ऊपर फोकस नहीं करता। Predicted Z score for Y variable, correlation value into Z score for X variable, मीनिंग कि जब हम प्रिडिक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं या फ्यूचर एरियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर हम एक एसोसिएशन तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली शो नहीं कर सकते। सो कोरिलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिग्रेशन विद जस्ट वन प्रिडिक्टर वेरिएबल। कोरिलेशन में हम एक प्रिडिक्टर वेरिएबल की बेसिस के ऊपर, जिसमें हमने X ऑन Y को डिस्कस किया था या Y ऑन X को डिस्कस किया था, तो उसमें एक वेरिएबल फैक्टर की बेसिस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि फ्यूचर में क्या सूरत हाल हो सकती है। Whereas the regression let you add in more predictor variables. We can figure out how much of the Y variable is explained by whole mass of predictor variables. We can figure out how much each predictor variables uniquely tells about the Y variables, and we can also takes the implication of two tests for significance of whole model, and for each individual variable we can generate these three areas towards the regression analysis. There exists a limitation of the correlation coefficient. Through R, it measures how closely the two variables approximate a straight line. हमें पता लगता है कि R जो है वो कितना closely measure करता है approximation दोनों variables की towards the straight line. It does not validly measures the strength of non-linear relationship. ये non-linear relationship की basically उसके ऊपर focus नहीं करता, validity के ऊपर focus नहीं करता, लेकिन approximate करता है straight line के ऊपर relationship को. When the sample size is n or is small, we also have to be careful with the reliability of a correlation. क्योंकि जब हमारे पास sample size small है, तो उस केस में हमारे पास जो limitation है वो ये है कि there are chances which there is a chances of creating type 1 error. type 1 error होने के बहुत वाज़े chances हो सकते हैं, इसीलिए हम sample size को बड़ा करते हैं, लेकिन जब हम sample size बड़ा करते हैं तो हमारे पास strength of relationship is shaky. Yes, significance तो measure हो सकता है, लेकिन strength के ऊपर हम थोड़ा सा doubted होते हैं, लेकिन छोटे sample size के ऊपर हमारे पास strength तो बहुत accurate आ जाती है, लेकिन significance में थोड़ा सा issue होता है। लेकिन बहरहाल जब sample size छोटा है तो we have to be very much careful about the reliability of correlation. Outliers could have a marked effect on R, meaning काफ़ी casual लोगों का response आता है R के ऊपर when we are talking about the coefficient of determination, और causal linear relationship के ऊपर भी हमें discussion करनी चाहिए कि what is actually the causal linear relationship and how it explains the major area towards the understanding. Now today what we have focused is correlation. कि आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने मेजर एम्फेसिस किया है कोरिलेशन के ऊपर। हमने एनालाइज किया है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो उनके दरमियान में एसोसिएशन किस तरह से शो होती है, और अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिस्कस की भी एक सिचुएशन के अंदर अप्लाई हुए होते हैं तो उनका रिलेशनशिप अगर हमने या उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हमने आइडेंटिफाई करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे पास आंसर है वो कोरिलेशन है। हमने ये भी डिस्कस किया कि कोरिलेशन जो है वो या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या नो रिलेशनशिप होगी। इट विल बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर, एंड इट विल बी मेजर्ड थ्रू सिंपल लीनियर, मल्टीपल लीनियर एंड पार्शियल लीनियर relationships. तो इस केस में हमने दो तीन टाइप्स भी डिस्कस की हैं कोरिलेशन की. We have also taken into account the coefficient of correlation and the coefficient of determination, और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात की. हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि रैंक्स में एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में, नॉन न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू स्पेयरमेंट्स डेफिनेटली. तो वहाँ पर हमने स्पेयरमेंट्स को भी एक नज़र हमने एक उसको भी हमने एक टच दिया है. एंड वी हैव आल्सो टेकन इनटू अकाउंट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ रिग्रेशन if correlation is there, and what is the major key differences which exist between regression and not covered in correlation area. So in conclusion हमने थोड़ा सा उसकी प्रिडिक्शन के ऊपर बात की कि जो रिग्रेशन है, दिस वेरी फर्मली, वेरी स्ट्रांगली डिस्क्राइब्स
the prediction towards the future through the mathematical interpretation, but correlation describes the very effective relationship association answers, but not the prediction answers very soundly. So that is something which is the major difference between the two fields of regression and correlation. So I hope कि correlation का और regression का major concept आपको clear हो गया होगा. In future lectures now we will be moving towards we will be touching ANOVA at first, और उसके बाद हम अपनी study को थोड़ा सा convert कर लेंगे towards the research orientation. और हमें पता लगाना है कि अगर हमने business environment को study करना है तो उसके अंदर हमारे पास data कहाँ से आएगा. अब तक हमें बहुत सारी quantitative techniques का idea हो गया है, लेकिन उन सारी quantitative techniques को अब हमने apply करना है research के ऊपर, कि basically ये quantitative techniques उस वक्त तक apply नहीं होंगी जब तक हमारे पास research की methodology या research का तरीका हमारे पास clear नहीं होगा. So now we need to enclose them together, and in future lectures we'll be talking more focused towards the research area. Thank you so much for this time. Hopefully these areas will facilitate you and your study in a major while, right? Thank you so much, and see you in future lectures. Allah Hafiz.